Hello and welcome to Studious Aura. Today we will discuss about cranial nerves. As you all know that we have 12 pair of cranial nerves in which 3 pairs are of sensory nerves and 5 pairs are of motor nerves and rest of the 4 pairs are mixed, which are both sensory and motor parts. Okay, so let's read them one by one. So first is cranial nerve 1, which is olfactory nerve. It has the sensory component and the site of attachment is forebrain, means it is attached to the forebrain. Okay, and by the name itself, you can think that it is responsible for the sense of smell. Like olfactory nerve is responsible for the olfaction. Okay, तो ये sense of smell के लिए important होती है. द स्मेल इन अवर सराउंडिंग, जो भी स्मेल हमें आती है किसी भी खाने की, अच्छी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है हमें, बेड स्मेल आती है, कोई सी भी स्मेल होती है, दैट इज सेंस्ड बाय ऑल्फैक्टरी नर्व. देन द सेकेंड नर्व इज ऑप्टिक नर्व विच इज सेंसरी नर्व एंड इट इज़ ऑल्सो अटैच्ड टू द फोर ब्रेन पार्ट. ओके, एंड ऑप्टिक नर्व जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द विजुअल एक्विटी एंड द विजुअल फील्ड. सो विजुअल एक्विटी क्या होती है? इट इज़ अ विजन, लाइक कितना छोटा आप देख सकते हो फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस. ओके, तो दैट इज़ विजुअल एक्विटी. एंड विजुअल फील्ड कि हम कहाँ तक की कितनी फील्ड में देख सकते हैं, दैट इज़ विजुअल फील्ड. तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल नर्व सेकेंड. देन द CN3 विच इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व. So by the name suggests oculo plus motor. So it has the motor component and site of attachment is midbrain. So first two nerves का जो site of attachment था वो क्या था? forebrain. Now the site of attachment is midbrain. Okay. So function क्या होता है oculomotor का? It controls the muscles that move the eyelid and pupillary constriction करवाते हैं ये. हमारी जो eyelid होती है उसकी मूवमेंट में जो भी मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें कंट्रोल करती है oculomotor nerve. ओके, देन ये प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन में भी हेल्प करती है, लेंस अकोमोडेशन में हेल्प करती है. सो ये नर्व करती क्या है कि प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट. फॉर एग्जांपल अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो प्यूपिल क्या हो जाएंगे? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. एंड देन इन द डिम लाइट क्या प्यूपिल क्या हो जाते हैं? वो डायलेट हो जाते हैं. तो दिस इज़ डन बाय ऑक्यूलोमोटर. देन फोर्थ cranial nerve is trochlear nerve. It has also the motor component and site of attachment क्या है इसका? midbrain. Okay, so function क्या है इसका? muscle that moves the eyes control the superior oblique muscles. ये जो है ना आईज की मूवमेंट की मसल्स को कंट्रोल करते हैं, मेनली सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स जो होती है ना उसे कंट्रोल करता है. अब ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल क्या करवाती हैं? ये आइज़ की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. जो हम ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं ना, अपनी पोजीशन को, अपने स्कल को सीधा रखने के बाद हम ऊपर या नीचे देख सकते हैं. तो दैट इज़ डन बाय ट्रॉक्लियर नर्व. देन cranial nerve 5 which is trigeminal nerve. So it has a mixed component. तो फर्स्ट टू नर्व्स जो थी वो सेंसरी नर्व्स थी, सेकेंड टू नर्व्स मोटर थी. नाउ द फिफ्थ cranial nerve is mixed which has both sensory and motor component. Site of attachment इसका hindbrain है. तो फर्स्ट टू नर्व्स का क्या था? forebrain. देन नेक्स्ट टू नर्व्स जो थे उनका था midbrain. नाउ अब रेस्ट ऑफ जितनी भी नर्व्स आएंगी उनका जो साइट ऑफ अटैचमेंट है वो hindbrain होगा. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस. नाउ फंक्शन क्या है इसका? फेशियल सेंसेशन में हेल्प करता है. फेशियल सेंसेशन लाइक जो भी टच, प्रेशर, पेन, ठीक है, एंड टेम्परेचर, इसके जो सेंसेशन होती है ना ऑन द फेस, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ट्राइजेमाइनल नर्व. देन कॉर्नियल रिफ्लेक्स में हेल्प करेगा. एंड मैस्टिकेशन, वी मैस्टिकेट द फूड, वी च्यू द फूड. ओके, तो उसमें हेल्प करता है ट्राइजेमाइनल नर्व, उसको सेंस करते हैं. ओके, सो 3 डिविजन्स होती है ट्राइजेमाइनल की: ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन. ऑप्थेल्मिक क्या होती है? इट इज़ प्योर सेंसरी डिवीजन. मैक्सिलरी इज ऑल्सो द सेंसरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर इज बोथ, लाइक सेंसरी पार्ट and the motor part. That's why it's a mixed nerve. Then cranial nerve 6 cranial nerve is Addisons nerve. It has the motor component and the site of attachment is hindbrain. And the functions are like it control the muscles of the movement of eye. Like eye movement की muscles को control करते हैं, but कौन सी muscles को?
ये कंट्रोल करते हैं लेटरल रेक्टस मसल की मूवमेंट को। ओके, सो ये लेटरल रेक्टस मसल क्या करती है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, साइड मूवमेंट के लिए। जब हम किसी को तिरछी नज़रों से देखते हैं या फिर हम साइड में कभी भी देख रहे हैं ना अपने स्कल को, मतलब उस सेम पोजीशन पे रखने के बाद जो हम साइड से देखते हैं ना, दैट इज़ द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द एब्ड्यूसेंस नर्व। Then seventh cranial nerve is facial nerve. Its component is also mixed, and site of attachment is hindbrain, and the functions are symmetry of the facial expressions. Facial nerve है तो facial expressions की symmetry का ध्यान रखेंगे, and the muscle movement in upper and lower face. Upper and lower face में जितनी muscle movements हो रही हैं वो सारी controlled by facial nerve. And salivation is also controlled by facial nerve, and tearing, taste sensation in ear. Okay. Then the eighth cranial nerve is vestibulocochlear nerve. So vestibulocochlear nerve has two parts, vestibular part and cochlear part, and it has a sensory component. It sends the sound waves. Okay. So site of attachment hindbrain है, इसका function क्या होता है, hearing and equilibrium. ये नाम से ही पता चल रहा है। तो hearing, vestibular part जो होता है वो hearing का responsible, and cochlear part is responsible for the equilibrium, which is the balance of the body. Okay. Then the ninth cranial nerve is glossopharyngeal nerve, which has the mixed component, both sensory and the motor. Site of attachment is hindbrain, and its function is taste, mainly the taste sensation and the sensation in the pharynx and tongue, it is also responsible for the sensing the gag reflex. Okay, then pharyngeal muscles and swallowing में help करता है glossopharyngeal nerve. Okay, so जो taste का जो sensation है वो दो nerves देखती हैं। तो फर्स्ट इज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, सो इट सेंसेस द टेस्ट ऑफ पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द टंग। पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द टंग जो होता है ना, उसका जो टेस्ट सेंसेशन है वो ग्लॉसोफेरिंजियल की वजह से होगा, एंड देन सेंसेशन इन द फेरिंग्स एंड टंग. ओके, देन cranial nerve, tenth cranial nerve is vagus nerve, which is also mixed, both sensory and motor. Then site of attachment is hindbrain, and the functions are muscles. It controls the muscle of pharynx, larynx and soft palate. So it controls the muscles in the neck region like pharynx, larynx and soft palate. Okay, then sensation in external ear, pharynx, larynx, thoracic and abdominal viscera. So it can sense the abdominal viscera also. It can sense it can sense the like signals from heart or the heart, lung or other organs in the abdomen and thoracic and abdominal region. Then the 11th cranial nerve is accessory nerve, which has the motor component, and site of attachment is hindbrain, and the function is sternocleidomastoid and trapezius muscles का control करते हैं ये. It controls the sternocleidomastoid and trapezius muscle. वो कहाँ होती है हमारी neck region में. This the red part, red or orange part you can see, that is the sternocleidomastoid muscles. So ये क्या करते हैं, flexion and extension of neck में help करते हैं. For example, when you move your skull to sidewise, जब आप साइड में देखते हो मुड़ के, so क्या होता है कि जो स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल्स है ये हमारी हेल्प करते हैं ना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में, तो उन्हें कंट्रोल करती है एसेसरी नर्व. देन 12th cranial nerve is hypoglossal nerve. ओके, सो ग्लॉसोफेरिंजियल में मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. नाउ सो हाइपोग्लॉसल नर्व हैज़ द मोटर कंपोनेंट. ओके, साइट ऑफ अटैचमेंट इज हिंडब्रेन itself. फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द टंग, मोस्टली द इंटीरियर 1/3 ऑफ द टंग. तो इंटीरियर 1/3 पार्ट होता है टंग का, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है हाइपोग्लॉसल नर्व. एंड टेस्ट सेंसेशन जो होती है ना 1/3 पार्ट पे, इंटीरियर 1/3 पे, वो भी कंट्रोल करता है हाइपोग्लॉसल नर्व. ओके, so you can see in the pictures like there are certain movements of the tongue which is controlled by the hypoglossal nerve. Okay, then you can use some mnemonics. Here are some mnemonics to learn the name of cranial nerves, which is like it is the very common mnemonic I have taken. O to touch and feel a very good velvet, such a heaven. Okay, and to remember whether the nerves are sensory or motor, you can remember some says merry money, but my brother says big brain matter more. So in this
S stands for sensory, M stands for motor, and B stands for both, means both sensory and motor. Okay, so you can learn other mnemonics also, like there are some other mnemonics. Old opie occasionally tries trigonometry and feels very gloomy, vague, and hyperactive. And on occasion, our trusty truck acts funny, very good vehicle anyhow. So you can use any of the mnemonic जो भी आपको suitable होता है. Even you can make your own mnemonics for that. अदरवाइज आप वैसे भी याद करोगे तो आपको वैसे भी याद हो ही जाएगा ये. सो बट आई सजेस्ट यू टू यूज़ mnemonics for remember for it long time. So thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel.